Hello everyone, our chief guests have arrived. So I would like for all of you to stand up and give them a round of applause, please. Welcome, sir. Sure. A very warm good morning, one and all present over here. How different is this morning? Dear audience, you will discover as a color of culture, feast and whole. Education is not a accumulation of knowledge, but the formation of character. Mainly, our basis on Howard Gardner famous theory of multiple intelligence and apply it in Montessori way. This theory identified the 9 types of intelligence every child has. The nature, the global citizen and leaders of tomorrow. Throughout the traditional value of love, empathy, discipline and respect. Hence, it is very important for every child to get a nourishing environment in his early stage of growth. We at Kokan aim to provide this in best possible way. It is an honor that beautiful audience have gathered here. I, Mrs. Swati Dorwe, extend a very sincere welcome to all of you present here, behalf of whole Kokan family. Now, we all have our traditional auspicious lamp lighting ceremony as the tribute of Mother Saraswati, the goddess of knowledge, by our chief guest, Mr. Dr. Venkatesh Dhawan sir. And I also call in our director, Mr. Dr. Atmanam Sejul sir and Dr. Daivashala Sejul ma'am. Please come on the stage, sir. संस्कृती आहे आपली प्रकाशाची, त्याला 7 चांदण्यांची, दीप प्रज्वलाने सुरुवात कार्यक्रमाची. ही संस्कृती हीच आहे भारतीय संस्कृती. थँक्यू सर. या कुंदेन तुटारा आरदवला या तुब्रवत्ता रुता या वीणा वरदंड अंदितकरा तबद्मातना तुततंकरा प्रभुतिबे देवे तदा वंदिता तामक पादोत्तर त्वति भगवती नित्य तदार्या Thank you so much. Thank you so much. Today we feel honored to be proud of chief guest Mr. Dr. Venkatesh Dhawan sir. He working as a medical superintendent in Maharashtra Public Health Department since 2018. He complete up to 10th standard in Marathi medium, 12th standard from Dayanand College, Latur. He completed
MBBS from Medical College Ambazogai and MS General Surgery from Government Medical College Miraj District Sangli. लैंग्वेज इज नॉट मैटर बिकॉज सर ने अपने 10th तक का एजुकेशन मराठी मीडियम से किया है, फिर भी हायर एजुकेशन MS तक अचीव किया है एंड ही गिविंग हेल्थ सर्विस टू पुअर एंड नीडी पेशेंट सिंस 32 years old. Sorry, 32 years. Big applause for sir. Please warm welcome to our chief guest, Mr. Dr. Venkatesh sir. Please come on this stage, sir. I request to Advika Jagtap and Abbas to offer a flowering plant to them. Thank you, Advika and Abbas. Now time for what you have been waiting so long. It's begin the function. I promise that with every performance, excitement of our celebration is going to get more stronger. We are ready to take you all some other words. I promise. Children are our tomorrow. Children are our future. Bright face that you are going to see here today while performing on stage, showing their talent, who rules the world and who are going to make a difference in our society. Our work start with the pray to Ganpati Bappa. So let's start our program with the song of Ganpati Bappa. Those who are going to do it are the student of playgroup Aradhya, Arohi, Shriyan, Sai, Shriyansh, Vian, Savi, Sanskriti, Anaira. Please come on the stage. Student.
वाह, व्हाट अ डांस! हमारे भारत देश में गणपति बाप्पा के आगमन का त्योहार स्पेशली इन महाराष्ट्र में मनाया जाता है। हमारे प्यारे प्यारे बच्चों ने गणपति बाप्पा के लिए बहुत सुंदर डांस किया। छोटे छोटे बच्चों के लिए और एक बार तालियां हो जाए। A good teacher will appreciate a good quality of his student. If one good quality allowed to emerge, what good quality will emerge that one? Ladies and gentlemen, our students are so talented who can do versatile. They can do their job really well. To certificate distribution, I request to Mr. Dr. Venkatesh Dhawan sir, please come on the stage. Republic Day. Please come on the stage, Bian. Sabi, please come on the stage. But today she is crying. Araina, please. Araina for consolation in Dashra and consolation in Rukmini Drasa. Arohi. For best in Christmas dance, third in Radha dress up, third in Rukmini dress up, second in Dashra and traditional dress up in Diwali. Give applause for Sai. Ayush. Best dance. Ayush for best dance in practice because he is new admission. आयुष को हमारे स्कूल में आके ओनली 1 वीक हुआ। लगता ही नहीं कि ये बच्चा हमारा नया स्टूडेंट है। वेरी नाइस।
Please, sir, take your seat. Thank you, sir. Now, it's annual day. Our theme is Media Impact. We all know that social media play a big role in our lives today. It is very popular in all age groups. In simple word, we can define the social media as a platform where we can post, search, chat and get connected with other people. There are lot of social sites and apps like Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, etc. As we know that every coin has two sides, social media also have both sides, advantages and disadvantages. One of the major advantage of social media is it is the full of information and it helps in providing education within seconds in our hand. Social media is also harmful to us. Some disadvantages: lack of privacy and cyber crime. Also, students nowadays addicted to social media and spend most of time on mobile and laptop. कामरे अपनी लैंग्वेज में हमें कुछ मैसेज देना चाहती है, तो चलो देखते हैं. प्लीज कम ऑन द स्टेज अनुष्का. बिग अप्लॉज फॉर अनुष्का. आई ताई आबा बाबा थोडा वेळ थांबा ना. कधीतरी त्या मोबाईलच्या वेळ आजूबाजूला बघा. दिसेल तेव्हा मी तुम्हाला तुमच्याकडे बघताना. मी जर मोबाईल फोन असते तर असा विचार करताना. मी जर मोबाईल फोन असते तर काय झालं असतं. सकाळी सकाळी उठल्यावर आबांनी देवाआधी मलाच पाहिलं असतं. दिवसभर ताईचं लक्ष फक्त माझ्याकडे राहिलं असतं. बाबा मला सगळीकडे गेले असते घेऊन. खिशात बसून मी त्यांच्या जगाले असे पाहून. आई माझ्याकडे बघून कुदू कुदू हसली असती. सतत मला गालाला लावून गप्पा मारत बसली असती. नको मला मोठा केक, नको नवे खेळ. गिफ्ट म्हणून द्याल का मला तुमचा थोडासा वेळ. बघा, आपल्याला मुलांनी सांगण्याची वेळ आली आहे का तुमचा थोडा वेळ द्या म्हणून. खरंच कुठेतरी विचार करण्याची वेळ आली. बिग अप्लॉज फॉर अनुष्का. नाउ nursery student entertaining us with their amazing footstep on When You Happy. Please give big round applause for Ovi, Arohi, Sanvika, Ayan, Neil, Omkar, Shivam, Shriyansh, Tanish, Ishan. Please come on the stage. Your hands. Yes. Welcome once again our little tiny tots who will be dancing if you're happy and you know it. If you're happy really, then come along, dance with them. Enjoy.
some lines. Life is full of problems. Problems is not permanent, but life is permanent. To face the problems with the confidence and enjoy your own life. Your little angel just told us how to enjoy yourself in any situation. Winning is great, but if you really going to do something in life, we have champion. Present their talent in the class. It is a matter to great honor and pleasure to appreciate and reward the hard work as well as performance of students who have made us all proud. I would like to call Director Mr. Atmaram Sejul sir. Please come on the stage. Big applause for Shiva. Sanmika. Sanvika for consolation in Dashra and consolation in Radha Dress-up. Shriyansh for consolation in Vittal Dress-up, consolation in Dasra Dress-up, and third in Diwali Diya decoration. Tanish. Tanish for third in Vittal Dress-up, third in Krishna Dress-up, second in Diya decoration, first in Dashera. Neem, consolation in Krishna Dress-up, consolation in Dashera, consolation in Vittal Dress-up, third in Diya decoration. Big applause for Neem. Arohi, consolation in Diya decoration, consolation in Dashera, consolation in Radha Dress-up, third in Rukmini Dress-up. Omkar, consolation in Krishna Dress-up, consolation in Diya decoration, third in Dashra and first in Vittal Dress-up. Big applause for Omkar. Ovi, first in Diya decoration, second in Rukmini Dress-up, second in Radha Dress-up, first in Dashera. Most achiever of year, Ovi. Big applause for Ovi. Ishan for dance. Then senior KG student Gitansh, please come on the stage. ईशान को भी आके 15 डेज हुआ है ओनली. यस. Gitansh, please come on the stage. Then Abira, Zia, please come on the stage, all of you. In Vittal Dress-up. Big applause for Gitansh. Abira, participation Ganpati, making consolation in running, consolation in Rukmini Dress-up, consolation in Republic Day dance, consolation in Diwali Rangoli.
Diya. For participation in Ganpati making, consolation in running, third in Rukmini dress up, second in Diwali Rangoli, first in Republic Day dance. Give applause for Diya. Prabhas. For participation in Ganpati making, consolation in Republic Day dance, consolation in Vittal dress up, consolation in Diwali Rangoli, second in running, second in Gandhi Jayanti speech, and first in Krishna dress up. Big hand for 1 मिनट। सीनियर केजी स्टूडेंट के पेरेंट ने अपने बच्चे का हाथ का सर्टिफिकेट और गिफ्ट ले लेना है। Advika Jagtap for consolation in Rukmini dress up, consolation in Radha dress up, consolation in Republic Day dance, consolation in Diwali Rangoli, participation in Ganpati making. Then Advika Gayakwad, participation in Ganpati making, consolation in Advika Gayakwad, participation in Ganpati making, consolation in Radha dress up, consolation in Diwali Rangoli, second in Republic Day dance, third in Dashera, first in running, first in Rukmini dress up. Advika Jagtap for consolation in Rukmini dress up, consolation in Radha dress up, consolation in Republic Day dance, consolation in Diwali Rangoli, participation in Ganpati making. Then Vedant for participation in Ganpati making, participation in running, consolation in Vittal dress up, consolation in Diwali Rangoli, and consolation in Dashera. Abhidnya, participation in running, participation in Ganpati making, consolation in Radha dress up, consolation in Diwali Rangoli, third in Republic dance, second in Rukmini dress up, first in Gandhi Jayanti speech. A big applause for Abhidnya. Arav for participation in Ganpati making, consolation in Krishna dress up, consolation in Dasra, consolation in Republic Day dance, consolation in Vittal dress up, consolation in Gandhi Jayanti speech, and first in Diwali Rangoli. Big applause for Arav. Sparsh, participation for Ganpati making, consolation in Republic Day dance, consolation in running, third in Krishna dress up, second in Dashera, second in Diwali Rangoli, first in Vittal dress up. Big hand for Sparsh. Abbas for participation in running, participation in Ganpati making, consolation in Diwali Rangoli, consolation in Republic Day dance, consolation in Dasera, third in Ganpati Jayanti speech, second in Krishna dress up, and third in Vittal dress up. Big hand for Abbas. Thank you, sir. Good morning, everyone. I'm Athar Sejal. I'm presenting the school report for the year 2023-2024. So this year, school reopened on 12th June and the first day of school was celebrated by taking pictures of our kids in a photo frame to make their day memorable. After that, we celebrated Father's Day on 20th June. On that day, kids made greeting cards for their papas. Just after that, the next day, there was International Yoga Day on 21st June. A week later, 28th June, we celebrated Palki. On that day, kids were dressed as Varkaris and Vittal Rukminis while chanting Vittal Vittal Jai Hari Vittal.
Cocoon Preschool had its own Dindi and kids experienced Palki for the first time. On the next day, 30th June, we celebrated Eid. The month of July started, and in the first week or 3rd July, we also celebrated Guru Purnima. Same month, 14 July, we celebrated Red Color Day to make our kids aware of the color red. On 21st July, we celebrated Rainy Day. We also taught children about the water cycle. The children also enjoyed tree plantation, and this activity was done with the help of kids. Next week, we celebrated Yellow Color Day. Month of August kicks off with Independence Day celebration. 1 week later, we celebrate Nag Panchami. In the last week of August, we celebrated Raksha Bandhan. On that day, we took Rakhi making activity. September comes with Teachers Day on 5th September. Next day, little Radhas and Krishnas celebrated Dahi Handi on the occasion of Janmashtami, the birth of Krishna. And the same day, we conducted fancy dress competition for our students. We awarded best Krishnas and best Radhas to appreciate our kids. 1 week later, we celebrated Hindi Language Day and also shortly celebrated Bail Poda to show our gratitude towards the ox. 15th September, we conducted an eco-friendly Ganpati making workshop for our students. Then everyone's favorite, Ganesh Chaturthi arrived. October month starts celebrating, for 7 days we celebrated with an eco-friendly Ganpati idol. This ended with an eco-friendly Ganpati Visarjan on 27th September. October started with Gandhi Jayanti and Lal Bahadur Shastri Jayanti. Next week, we conducted Green Color Day and Vegetable Market. Kids became little grocerers and fruit vendors. They enjoyed and took the experience of a flea market with parents as their customers. I hope the parents also enjoyed that little beautiful market. Then 16th October, we took germination activity to make our kids aware of how the seed is potted and how it germinates. 23rd October was the celebration of Dandiya and Dashera. After so much fun, education and evaluation of students is equally important. So it was time for midterm exams. All students showcased their academic excellence. Exams were followed by Diwali celebration on 9 November. We organized Diya decoration competition for the kids with their parents for nursery kids. For junior KG we did garland making, and for UKG kids we did Rangoli making competition. All parents of nursery kids enjoyed this competition after a very long time in their life. Our kids also got the message of crackers free Diwali. After the celebration, Diwali vacation started. School reopened on the 20th of November. Kids came in school with new enthusiasm. The next month, 10 December, we celebrated Blue Color Day and we also celebrated winter season. Kids learned about the clothes we wear, the food we eat during this season. On 15 December, we organized a picnic to Mohan Dharia Garden. All students enjoyed our picnic. The last week of December, the most awaited celebration of all. Yes, it was Christmas celebration. On that day, kids got to dance, got chocolates from Santa, and had the best time of their life. Again, kids went for Christmas vacation for 1 week. New Year came with new energy and new goals. In the second week of January, we celebrated Makar Sankranti. Then came Republic Day. On that day, kids conducted activities using the tricolors and performed dances on patriotic songs. In February, we celebrated Basant Panchami and Shiv Janmotsav. The next month, we will be celebrating our own Science Expo with the kids of nursery, junior KG, senior KG. Will be giving answers of why and how by their experiments and explanation. I'm sure all of our students will perform beyond their limit during the Science Expo. We will also be celebrating Marathi Raj Bhasha Divas in the same month. In between all these events, we have regularly focused on study and progress of our kids. Continuous monitoring and evaluation of the children is always going on. Teaching and parenting is our privilege. The closer we work together,
the more fruitful it is for our children. Thank you so much and have a good day. Thank you, sir. Clap are the best motivation for you could give to our young lords. Present in our parents in our life, we are facing the many problems, happiness and sorrow are playing the game with us. So we become sad. But here our kids saying that जिंदगी की धूप छाव के साथ भी हमेशा खुश होकर हर पल जिए. So junior KG student, please come on the stage. Samir, Dhruv, Jadav, Kabir, Prayan, Yugnik, Avnish, Myra, Aditi, Ayan, Vaishnavi, Anushka, Harsh, Shivansh, Anuj, Vaishisht, Arav, Shriyan, Ayush, Anushka, Anaisha, Arushi and Dhruv Markad. दो। नहीं बेटा, फोन नहीं देखती। मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा ये लो, लेकिन बस खाना खा लो। क्या आप सभी इस चीज से गुजर रहे हैं जिससे मैं गुजर रही हूँ यहाँ?
सोच लो इस पल है जो वो दास्तां हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है रूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो। हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो। जो है समा कल हो न हो। I know that you like this performance so much. Please give big hand. Now it's time to acknowledge the talent of student and certificate distribution of junior KG class. I request to Mr. Dr. Dhawan sir and Mr. Director sir, Mr. Sejul sir, please come on this stage. Clap for Vashisht. Ananya, participation in Ganpati making, consolation in Dashera and consolation in Mala making competition. अनुष्का की मम्मी और अभिज्ञा की मम्मी। अनुष्का और अभिज्ञा उधर ज्योति मैम खड़ी है, उनके पास जाना है आप दोनों को। प्लीज सपोर्ट आवर टीम। और जूनियर केजी पेरेंट को रिक्वेस्ट है, उनका जो हाथ में दे रहे वो आप यहीं पे ले लो तो बच्चे जल्दी। पार्टिसिपेशन गणपति मेकिंग, participation in Ganpati making, consolation in Mala making, consolation in Krishna dress up. Anaisha, consolation in Mala making, consolation in sport and third in Dashera. Harsh. Clap for Anaisha. Harsh. Participation in Ganpati making, consolation in Mala making and third in Krishna dress up. Shriyan, consolation in Dashera, consolation in Mala making and consolation in Krishna dress up. Dhruv Markar, participation in Ganpati making, second in Ganpati Jayanti speech, third in Mala making. Big applause for Dhruv. Then Arushi, participation in Ganpati making, consolation in Dashera, second in Mala making and second in Radha dress up. Big applause for Arushi. Ayush, participation in Ganpati making, consolation in Mala making,
consolation in Krishna dress up, and second in Dashahara. Clap for Ayush. Then Anuj, participation in Ganpati making, consolation in Mala making, consolation in Dashera, and consolation in Krishna dress up. Big applause for Anuj. Anushka, participation in Ganpati making, consolation in Dashera, consolation in sport, and first in Mala making. Big applause for Anushka. Shivansh, participation in Ganpati making, consolation in Dashera, third in ball counting, second in Krishna dress up, first in Gandhi Jayanti speech, and first in Dashera. Big applause for Shivansh. Thank you, sir. Sir, Mr. Dhawan sir and Mr. Sejun sir, please come on the stage again. Through participation in Ganpati making, consolation in Dashera, and consolation in Mala making. Clap for Dhruv. Avnish, please come on the stage. Participation in Ganpati making, consolation in Dashera, and consolation in Mala making. Big applause for Avnish. Vaishnavi, participation in Ganpati making, consolation in Mala making, and consolation in Dashera. Clap for Vaishnavi. Prayan, consolation in Dashera, consolation in market, and first in sport ball counting. Clap for Prayan. Kabir, participation in Ganpati making, consolation in Dashera, and third in Krishna dress up. Big applause for Kabir. Then Myra, participation in Ganpati making, consolation in Dashera, and consolation in Mala making. Big applause for Myra. Yugni, participation in Ganpati making, consolation in Mala making, and Santa dress up in Christmas, and first in Krishna dress up. Big applause for Yugni. Aditi, participation in Ganpati making, third in Dashera, second in sport ball counting, first in Radha dress up. Big applause for
Aditi. Thank you, sir. Please take your seat. Ananya, Harsh, Dhruv, Shivansh, Anuj, Vaishish, Arav, Shriyan, Ayush. All of you, please come on the stage. तुम आज खेले? मैं वो क्रिकेट खेल रहा था। राहुल आप पढ़ाई क्यों नहीं करते? जब देखो क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। वही तो, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। नहीं नहीं, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, खेलोगे कूदोगे तो होगे नवाब। What a wonderful performance. Big applause for all kids. हेलो एवरीवन। जूनियर केजी बच्चे अभी पेरेंट के पास दे दो ये सॉन्ग। बड़े हो जाएंगे और हम बूढ़े हो जाएंगे जैसी मैं हो गई हूँ। इसलिए रिक्वेस्ट है, किसी ने भी फोटो नहीं निकालना है और वीडियो तो बिल्कुल नहीं। और अभी किसी ने निकाला बाहर तो मोबाइल मेरे पास आएगा। कभी ना कभी कोई ना कोई गलती की है। आज हमारे नन्हे मुन्ने भी कह रहे हैं यही उम्र है, कर ले गलती से मिस्टेक्स। नेक्स्ट सॉन्ग इज गलती से मिस्टेक। ये लीजिए आपके टेस्ट पेपर्स। परफॉर्मेंस के रिकॉर्डिंग नाउ नहीं होता जा रहा है और तुम तो गलती पे गलती ही किए जा रहे हो। महसूस हुआ है लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक। हो रहा है क्यों
कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख, यही उम्र है गलती से मिस्टेक, यही उम्र है गलती से मिस्टेक, यही उम्र है गलती से मिस्टेक, यही उम्र है गलती से मिस्टेक बेटा। चल मसल बुलाना, थोड़ी बॉडी बनाना, तेरी चिकनी बातों पे कमल की फसल उगाना। अरे चल बेटा शुरू हो जा, शुरू बगल उठा के थोड़ा दियो लगाना, इसी बगल वाली को मनोरनी खुशबू सुनाना। चल ऊपर से तो बटन गिले कर तो बताना, हवा सीना दिखाना, हवा सीना दिखाना। परसों तलक तू साइकिल पे घुमा है, हाईवे पे मोटर साइकिल भगा के देख, स्पीड में तुमको अगर सर्दी लगे तो स्पीड पे पीछे लड़की बिठा के देख, यही उम्र है गलती से मिस्टेक, यही उम्र है गलती से मिस्टेक, यही उम्र है गलती से मिस्टेक, यही उम्र है गलती से मिस्टेक बेटा। Wow, what a wonderful performance by junior KG students. Give applause for all. Our kids going to speak on topic social media. They want to take a moment to explore the fascinating world of social media and its profound impact on lives. Please give them big applause. और मेरे साथियों से तो देखो, जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप, पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा, मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। चीज को टिकटॉक कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ, मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी।
चलो देखो। मम्मा मम्मा मेरे कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। पापा कल मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट, मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। पापा अब तो आप मुझे पढ़ाओगे ना? बेटा मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है, तुम मम्मा के पास चली जाओ। ओके पापा। मम्मा 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 मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा मैं वेट करती हूँ। ओ गॉड मम्मा को कितना देर हो गया, मम्मा तो अब तक नहीं आई। क्या करूँ, मैं तब तक मेल पे सर्च ही कर लेती हूँ। देखो एक और शिकार, इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं। नादान लड़की, तुम मेरी जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो, मेरा नया शिकार। रात दी गल सुनियो सुनियो वे, रात दी गल सुनियो सुनियो वे, कोई ना चार छुसे रे, पीछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, पीछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, डांडा दे काले काले चेहरे, डर डांडा डसे और मंजिल हंसे। आहट से डरियो डरियो वे, आहट से डरियो डरियो वे, खौफ के अंदर लगे डेरे, हौले से चलियो चलियो वे, हौले से चलियो चलियो वे, लगता दे काले काले चेहरे, डर डाडा डसे और मंजिल हंसे, डर डाडा डसे। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डॉक्टर को जल्दी फोन करो। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। एक और शिकार, तुम्हारे 5000 FB फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते। वीरान शक्तिमान।
ज़्यादा उपयोग करने से आपके बच्चे की ये स्थिति हुई है। अभी उसे अपने फन की ज़रूरत है। आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कीजिए ताकि वो अपने रियल फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सके। इसी से उसकी रिकवरी जल्दी होगी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। कैसा वक्त आ गया है, हम अपने रिश्तों से ज़्यादा वक्त सोशल मीडिया को दे रहे हैं। भूल जाते हैं वो खुशियाँ जो अपनों के साथ रहने में है। दूसरों की तकलीफ़ों का मजाक बना देते हैं और अपनी तकलीफ़ों का स्टेटस बना लेते हैं। हम इतना ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करते हुए भूल रहे हैं कि सोशल मीडिया ही हमारा उपयोग कर रहा है। घायल परिंदा है तू, दिखला के जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरी जुनू की आगे अंबर पनाही मांगे, कर डाले तू जो फैसला। टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही बनाने में। Thank you, student. What a melodious performance. Good message by senior KG kids. मीडिया प्रदूषण को रोकने का करो संकल्प। मीडिया प्रदूषण को रोकने का करो संकल्प। रिलेशन माइंड हेल्थ बचाने का यही है विकल्प। रिलेशन हेल्थ माइंड बचाने का यही है विकल्प। Now I request to Honorable Chief Guest Mr. Dr. Venkatesh Dhawan sir to say a few words and motivate our student. Please come on the stage, sir. नमस्ते। सतून प्रिन्सिपलच्या डायरेक्टर डॉक्टर देवशाला, डॉक्टर आत्माराम सर आणि सर्व पॅरेंट्स आणि लहान लहान कृष्ण आणि राधा, मला आपण बोलवल्याबद्दल आणि आपला अत्यंत आभारी आहे। आज हा कार्यक्रम खूप चांगलं वाटलं। सर्व राधा, सर्व कृष्ण, असं वाटलं की आपण द्वापर युगातच गेलेलो आहे। छान। पॅरेंट्स पण त्याचा पुरेपूर आनंद घेत होते। शिक्षकांनी घेतलेली मेहनत, मॅडमनी केलेलं डायरेक्शन, सर्व काही एकदम स्तुत्य आहे आणि असंच आपण दरवर्षी मला बोलवावं अशी माझी इच्छा आहे। आणि ज्यावेळेस MBBSला लागलो त्यावेळेस एक ती छोटी राधा अॅप्रॉन घालून फिरत होती। पहिल्या दिवशी आम्ही जेव्हा अॅप्रॉन विकत घेतला, रात्रभर आम्ही घालून एक आरशासमोर हालत नव्हतो आपण कसं दिसतो हे, परंतु ही आजची डॉक्टर राधा ही मस्त बोलली फिरत होती। छान वाटले एवढा बोल मॅडमने जे हे मांडलेलं आहे सर्व, आणि याच्यात फरक दिसत होता की ज्युनियर KG, सिनियर KG किती म्हणजे त्याच्यामध्ये बदल झालेला आहे। सर्व बोलली फिरत आहे। उद्या चालून हे भारताचे नागरिक खूप यशस्वी होतील अशी आशा आहे। सर्व शिक्षकांनी एवढी मेहनत घेतली, दैवशाला मॅडमने मेहनत घेतली,
आणि आत्माराम सरांनी त्यांना प्रोत्साहन दिलं हे बघून खूप आनंद झाला. Thank you, sir, for your golden word. It is an honor to hear from you. Ovi's mummy. Paude, please come on the stage for art, craft, creative, extra parents. Please come on the stage. OV's mummy is nursery student parent. उनका पिछले साल वो हर चीज अपने बच्चे के साथ जो भी है एक्टिविटी हो, कुछ उसको बनाना है या ड्रेसअप करना है, उससे कुछ करवा के लेना है, इतना ध्यान दे के करते हैं कि बस पूछो मत. काम तो हर एक को होता ही है, काम नहीं ऐसा एक भी नहीं है कि जो खेती में काम करता है वो भी बिजी है, लेकिन मेरे बच्चे के लिए मुझे क्या करना है, तो मुझे जो भी आज ये 7th ईयर है मेरा, तो 7th ईयर से देखती हूँ कि जैसा उन्होंने देखा है वैसे सिचुएशन, कैसा भी सिचुएशन आए, हर एक वक्त वो उनके बच्चों से उतना ध्यान दे के सब करवा के लेते हैं. तो मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि उनसे कुछ जैसे वो करते हैं सेम टू सेम कोई नहीं कर सकता, लेकिन हो सके उतना हम हमारे बच्चे की तरफ टाइम देंगे या उनके साथ रहेंगे तो आपका फ्यूचर बहुत बढ़िया रहेगा. तो सुप्रिया पावड़े उनका मैं सत्कार इधर करती हूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेरेंट बोल के. हम सबको परी के नाम से जानते हैं, उनको भी कुछ 2 वर्ड बोलना है और किसी पेरेंट को कुछ बोलना है तो आप पहले बता दो तो आपको भी 2-2 मिनिट मिल जाएगा. ओके, थँक यू फॉर एव्हरीवन. स्वतः जय आणि मी मुलीला पण इथंच टाकतात. दोघांची प्रोग्रेस खूप छान आहे आणि आय एम सो लकी. दिस वर्ड्स फॉर माय डॉटर. आय एम सो लकी ॲज यू माय डॉटर. थँक यू फॉर ऑल. Thank you, ma'am. Come on the stage. नमस्कार सगळ्यांना. ॲक्च्युली मी परीची मम्मी, आरायनाची मम्मी. सो परी कोकण स्कूलला 1.5 इयर्सपासून स्टार्ट केले. लाईक ती खूप लहान असताना डेकेची गरज होती मला. ॲज आय एम अ वर्किंग वुमन. Post COVID, it was really hard for me to come up with all household chores with my baby. But I'm so glad की टीचरनी त्या टाइमला डेकेअर स्टार्ट केले विथ द स्कूल. सो माझी फर्स्ट प्रायोरिटी डेकेअर आहे टिल द एज ऑफ 5. बिकॉज मला असं वाटते की 5 वर्षापर्यंत मुलांनी त्यांचं जग त्यांनी एन्जॉय करावं. मला कोणत्याही गोष्टी असं फोर्सफुली लादायला नाही आवडत. बिकॉज ज्यावेळी आपण लहान होतो आपल्याला जे एन्व्हायरमेंट मिळाले, अनफॉर्च्युनेटली ती एन्व्हायरमेंट आता नाही आहे. सो इट्स आवर ड्युटी ॲज अ पॅरेंट अँड एन्व्हायरमेंट टू गिव्ह दॅट पर्टिक्युलर
wanted to enjoy them because जर वेळी मी जरी म्हणलं की माझी मुलगीनी खूप प्रोग्रेस करावी at the age of 3, it's really bad opinion from my end because त्यांना त्यांची वेगळीच लाईफ असते. आपण जरी फोर्सफुली त्यांना डिसिप्लिन मॅनरमध्ये ठेवू तर आपण त्यांना काय शिकवायचे हे राहून जाईल, पण त्यांनी त्याचा नेगेटिव्ह इम्पॅक्ट होईल. आणि हे मी पर्सनली खूप जवळून पाहिले बिकॉज मला वेळ नसल्यामुळे मी कंटिन्युअसली दॅट IT करिअर यू ऑल मे नो की कॉल आला आपल्याला लॉग इन करायचे आणि आपल्याला आपलं काम करायचे. बेबीकडे मला लक्ष द्यायला येत नव्हता, सो त्यामुळे ती इतकं टँट्रम घरात असं वाटायचं की बाबा सगळे लोक विचारायचे मॅडम तुम्ही मुलीला मारताय का. त्यामुळे मला त्यावेळी रिअलाइज झालं की नाही आहे आपलं करिअर लाईफ इट विल बी मूव ऑन एव्हरी टाइम. आपल्याला ह्याच्यापेक्षा बेटर ऑपॉर्च्युनिटी उद्या भेटेल. आता जरी मी होल्ड केला आणि आपण जरी आपल्या मुलांकडे लक्ष दिलं ना की पैसा हा येईल आणि माझं पण ग्रोथ होईल, बट टिल द एज माझी मुलगी पण माझ्याकडून काहीतरी शिकेल. सो ही कुठे ना कुठेतरी मला जाणवते. सो त्या मोमेंटपासून मी काय करते विकेंडला 100% नो TV, नो सोशल मीडिया. आय विल टेक हर एव्हरी इव्हेंट मी एका महिला मंडळाची ॲज अ मेंबर आहे. इवन दो आय सजेस्टेड देम नॉट गिविंग दॅट रिस्ट्रिक्शन बेबीला नका आणू इथे सगळं म्हणजे की ऑड होईल वगैरे. मी त्यांना सांगते नाही मुलं पण शिकतील आपल्याकडनं काहीतरी. आणि कसं मुलांना मी ॲज अ मदर हाऊ आय एम डीलिंग विथ ऑल थिंग्स इट नॉट ओनली इश्यू ऑल थिंग्स देन शी विल ऑल्सो थिंक दॅट ऑल ब्रॉड मॅनर. अदरवाइज की आपण आय रिअली अप्रिशिएट द इव्हेंट दॅट बेबीज आर सेइंग राईट नो say no to social media. That was really need for the society because मी 24 hours मध्ये 8 ते 10 तास मी जॉब करते आणि त्याच्यात सकाळी माझी मुलगी उठताना सगळ्यात त्यांचे पप्पा तिला पाहिजे. जर त्यांनी नसेल ना she was so angry because she want her father to be there that time, right? And even at evening at 8:30 max she will wait. पप्पा येणार आहे का. जर ते येणार नसेल तर शी विल से मम्मा तू भांडली का पप्पा संग, पप्पा नाही येते आज घरी. सो वेन माय हजबंड लिसन दॅट वर्ड यू नो ही वॉज सो हॅपी की आपल्याला माझ्या मुलगीला कळते की काय एन्व्हायरमेंट आपल्या घरचे. ओनली सिंगल पॅरेंट अँड हजबंड अँड वाईफ हू इज टेकिंग केअर बेबी विथ देअर सोशल ॲज वेल ॲज देअर वर्क लाईफ. इट वॉज रिअली हार्ड. सो अनफॉर्च्युनेटली मी ते जॉईंट फॅमिलीमध्ये नाही आहे, बट मला असं वाटते परीचे जे स्कूल आहे आय रिअली अप्रिशिएट ऑल द टीचर ॲज अ पॅरेंट बिकॉज मला कुठंच कमी नाही वाटलं की बाबा परी आज रडते आणि आज तिला ताप आले तरी पण त्यांची मॅडम मला कधीच फोन नाही केला, डिस्टर्ब नाही केलं. ते म्हणते की नाही त्यांची मुलं तर आपली मुलं आपली जिम्मेदारी आहे. ते 5 वर्ष असो 5 तास असो किंवा 10 तास असो they are very careful about our babies and that was really appreciate for them. आणि अजून एक गोष्ट मला फक्त की माझं एक इंटेन्शन आहे, आय डोंट नो वेदर इट इज राईट और रॉंग, की टच विथ ट्रेडिशन. आपण आता सध्या एक मृगजळाचं मागे चाललोय बिकॉज आपण इंडियामध्ये राहतो आणि आपली मातृभाषा जसं की मराठी आणि मोरओव्हर हिंदी. आपण इंग्लिशकडे इतकं वळत आहे ना की त्यामुळे सगळ्यांना असं वाटते की आपल्या मुलांनी आता इंग्लिश बोलायला शिकलं पाहिजे, इंग्लिशमध्येच ॲक्टिव्हिटी करायला पाहिजे. बट मला नाही वाटत की दॅट इज सो मॅन्डेटरी फॉर देअर लाईफ बिकॉज मी एक कर्नाटक अँड महाराष्ट्राची बॉर्डरमधून मी शिकून आली आहे. आय वॉज फ्रॉम व्हेरी लिटल विलेज. आय कॅन्ट से द नेम राईट नाव बिकॉज मला पण वाटते की माझं खूप छोटं आहे बाबा गाव, कशाला नाव घ्यायचं
चालू आहे आता की मुलांना ब्युटिफिकेशन मोस्ट सगळे आपलं कसं ब्युटी इव्हेंट्समध्ये जसं आपण पार्टिसिपेट करतो पोरांना ती क्रेज आले पण तिथे कुठे ना कुठेतरी त्यांचं आपलं जे गुड अप्रोच असते किंवा त्यांची ॲबिलिटीज असते ते मे बी नदरंगा होत असेल. त्यामुळे मला असं वाटतं की आपण मराठी आपली संस्कृती पण जपू विथ द सेम आपण इंग्लिश पण शिकू आणि वेस्टर्न लाईफ इतकंच अडॉप्ट करायला पाहिजे जेवढं आपल्याला पचेल. अदरवाईज आपण आज माझी मुलगीला इंग्लिशला बोलायला शिकली आणि माझी नेबर्स आहे मराठी. टू बी फ्रँक करंटली माझी नेबर आहे तेलगू. सो माझी मुलगीला त्यांच्याकडे जायला येत नव्हतं बिकॉज शी डोंट नो तेलगू राईट अँड इवन दॅट तेलगू लेडी ऑल्सो डोंट नो मराठी अँड शी कांट अंडरस्टँड इंग्लिश अँड हिंदी ॲज वेल. बट स्टील यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट इफ यू वॉन्ट. तुमचं मनात यायला पाहिजे आपल्याला नेबर संग बोलायचे आपली मुलगीला त्यांची ओळख करून द्यायची. त्या मोमेंटला नो लँग्वेज विल स्टॉप यू. यू कॅन मेक दॅट फ्रेंडशिप यू कॅन मेक दॅट बॉन्ड राईट. सो असं नाही की सगळे इंग्लिशमध्येच व्हायला पाहिजे वगैरे. सो आय रिअली प्राऊड ऑफ दिस स्कूल. थँक्यू टीम. बाय. थैंक यू मैम. आपने एक बाहर किसी का ऑटो खड़ा है और एक पाटिल नाम की गाड़ी खड़ी है तो उनका कुछ तो भी स्टक हो गया है वो निकालना है. 4 व्हीलर एक 4 व्हीलर. The program is so nice. I thoroughly enjoyed because I thought it will be like dance and then we'll finish it up. But no, the topic which you have to say, इतका छान टॉपिक त्यांनी घेतला. आपण सगळे मोबाईलमध्ये बिझी असतो मुलांना वेळ देत नाही हे आपल्याला दिसतं तरी पण आपण ते जाणून घेतो. पण आजचा जो मेसेज दिला त्यानंतर मला असं वाटतं की सगळेजण ते बघतील थोडा विचार करतील आणि खरंच त्यांचा प्रोग्राम खूप छान झाला. सगळ्यांनी खूप मस्त केलं ऑर्गनाइज व्यवस्थित. थँक्यू सो मच. आपने आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया. नाउ आई रिक्वेस्ट टू मिस्टर कविता पाल्टा सिंह मैम टू प्रपोज द वोट ऑफ थैंक्स. प्लीज कम. Thank you, ma'am. Good afternoon to all of you. I, Kavita Palla Singh, on behalf of Kokon Preschool, is going to present vote of thanks. Gratitude makes sense of our past, bring peace for today, and creates a vision for tomorrow. First of all, I would like to thank our guest of honor, Dr. Venkatesh Limradhavan sir, who, despite of their busy schedule, came here and gave their valuable time. I am deeply thankful to the cooperative and supportive parents. Your constant support always help us to conduct such major events. No doubt that you help us in every step. A warm thanks goes to our director sir, Dr. Atmaram Shaju sir, and our beloved principal, Dr. Davisala Sejul ma'am, for their constant support. The grand success of this program is possible due to continuous monitoring and guidance of principal ma'am. I extend special gratitude to the non-teaching staff for their enormous cooperation in this event. Finally, I thank the shining stars of Kokon Preschool for their wonderful performances. You are the crown of today's program. Once again, thanks to everyone. Well, we believe that any academic or national event is incomplete without the national anthem of our beloved country. Thus, I would like to call all teachers and all UKG students on stage for national anthem. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध